धन्यवाद मैडम। मैं सभी सहभागियों का और आज के मुख्य वक्ता हितेंद्र पटेल जी का स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में खास करके 90 के दशक के बाद से जब एक वैचारिक पहचान जो लोगों के पास थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो वह आइडियोलॉजी बेस्ड आइडेंटिटी थी, जब से वो उसका विघटन हुआ है तब से पूरी दुनिया में हम कौन हैं, हमारे साथ कौन है, इन सब चीजों को लेकर के एक नई बहस शुरू हुई है। और इसी बहस के क्रम में राष्ट्रवाद पर भी काफी कुछ लिखा जाने लगा है। वैसे तो एक बड़े इतिहासकार हैं आर जी कॉलिंगवुड। उन्होंने कभी ये कहा था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में विज्ञान जितना महत्वपूर्ण रहा है, 20वीं और 21वीं शताब्दी में इतिहास उतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हम आज के समय में ऐसा देखते भी हैं। और जब हम आते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर, खास करके भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर, तो भारत में राष्ट्रवाद की कोई एक धारा नहीं रही है और राष्ट्रवाद की अलग अलग जो धाराएं रही हैं उसके बारे में कई बार तो ऐसा कहने की कोशिश की जाती है कि ये धाराएं एक दूसरे को काटती थी, एक दूसरे की जो शक्ति थी उसको छीण करने का प्रयास करती थी। लेकिन इसके उलट भी चीजें हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो धाराएं मिल करके एक सम्मिलित शक्ति, सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न कर रही होती थी। और कम से कम भारतीय स्वाधीनता, या जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता का समन्वयात्मक मूल्य बोध कहते हैं, वह कम से कम इसी चीज की एक अभिव्यक्ति होती है। फिर भी यदि हम 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की यात्रा करें और इस पूरे क्रम में भारत में जो आंदोलन होते रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के द्वारा, उसमें तो ये बात देखी जा सकती है कि पूरे भारतीय राष्ट्रवाद का जो प्रारूप है उसमें एक प्रकार का बहुलतावाद है, एक तरीके का प्लुरलिज्म है। लेकिन जब कभी ऐसी बात आती है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ थे, हम राष्ट्रीय आंदोलन में किसके साथ थे और हम राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कर रहे थे, और यह प्रश्न जब सत्ता के रुझानों से जुड़ जाता है तो फिर ऐसी व्याख्याएं होने लगती हैं जिन व्याख्याओं में उसकी वास्तविक धारा छुप जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जनता उससे गायब हो जाती है। तो इतिहास लेखन के क्रम में और राजनीति शास्त्र में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनमें जरूरत इस बात की होती है कि एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी जो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करता है, जैसा कि व्याख्यान मेरा पिछले शनिवार को था, तो उसमें क्या होता है कि वह वक्ता एक तरीके का स्केलेटन बनाने की कोशिश करता है, कंकाल बनाने की कोशिश करता है थ्योरी के जरिए। और उसमें जो हाड़ मांस रक्त मज्जा है, यह इतिहास के तथ्य और इतिहास के विचार ही भरा करते हैं। और हितेंद्र पटेल जी की खासियत ये है कि हितेंद्र पटेल जी सिर्फ जो तथ्यात्मक इतिहास है, विवरणात्मक इतिहास है, सत्ता के विशेष रुझानों के द्वारा लिखा गया है, ये सिर्फ उसी को नहीं समझते हैं, बल्कि उस क्रम में जनता क्या सोच रही थी और खास करके जो विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य का सृजन हो रहा था उसमें किस तरीके से इतिहास को देखा गया है। हितेंद्र पटेल जी उन मुद्दों को भी रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। और इसी सिलसिले में जो इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के अंतर्गत जो फेलोशिप मिली थी, उसमें इन्होंने आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ पर भी किताब उनकी आई है, राजकमल से आई है, और इन दिनों वो भारत में एक बेस्ट सेलर बुक है।
इसके अलावा हितेंद्र पटेल जी की एक किताब रूटलेट से भी आई हुई है। हितेंद्र पटेल जी की खासियत ये है कि ये एक मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी है, और इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, असमी हो, इवन मैथिली हो, इन पर इनका एक बड़ा गहरा पकड़ होता है। मैंने जो हितेंद्र पटेल जी को कई संवाद के क्षेत्रों में देखा है, तो इन्हें बहुत प्रभावोत्पादक पाया है। और मैं आज इनसे इसके पहले की गुजारिश करता हूं, ये पूरा मंच एक थॉट प्रोवोकिंग और इनलाइटनिंग लेक्चर के लिए हितेंद्र पटेल जी का इंतजार कर रहा है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं हितेंद्र पटेल जी का स्वागत करते हुए यह मंच अब उनको सौंपता हूं, और आगे 1 डेढ़ घंटे यह मंच आपका है। कुछ समय एक एक घंटे 1.5 घंटे बोलने के बाद हम लोग फिर इस मंच पर उन सवालों को लेंगे जिससे हम संवाद कर सकें। तो हितेंद्र पटेल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार।
Yes, yes, you are audible and very properly. और तो भेज सकती हैं। तो तुम हिस्ट्री के कुछ ग्रुप में भेज करके ज्वाइन करने के लिए तुम ज्वाइन करो सब।
अभी अभी आपके पास समय है, अभी 25 मिनट लगभग समय और है आपके पास। हाँ, ऐसा हमारे विद्यार्थियों की डिमांड भी थी, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू। राजनीतिक जो कर रहे थे उसमें एक तरफ उनको सारी शक्ति संचित करनी है अंग्रेजों के खिलाफ, सबको जोड़ करके रखना है और सबको प्रॉमिस भी करना है और उनको धैर्य भी रखने के लिए कहना है, उनको जोड़े भी रखना है और अपेक्षा करनी है कि ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो सदिच्छा, राष्ट्रीय सदिच्छा के ताप से गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये जो असंभव सी बात लगती है, जो दुनिया में किसी भी बड़े नेता ने ऐसा शायद न सोचा होगा, किसी राजनेता ने ऐसा सोचा होगा, संभव है सोचा ही होगा, लेकिन उसको राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से गांधी ले आए और लाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक अभिनव प्रयोग था उनकी तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ राजनीति में हिंदू दबाव बन रहा है, मुसलमान दबाव बन रहा है, डिप्रेस्ड क्लास की मांगे बढ़ रही हैं, वामपंथी दबाव है, श्रमिकों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है और सभी तरह की चीजें हो रही हैं। और गांधी 30 के दशक में अब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि अब वो अपील करने की स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात, जो बात मैंने कही, जो याद रखने की है कि सिर्फ और सिर्फ गांधी ही जनता के को आंदोलन में ला सकते थे और यही वो शक्ति थी जो किसी भी बड़े नेता में नहीं थी। इसी कारण से गांधी वॉज इंडिस्पेंसिबल। अगर राजनीति करनी है, अगर नेशनल मूवमेंट करना है, तो गांधी को लाना ही पड़ेगा। कई बार नेताओं ने गांधी को छोड़ दिया, लेकिन जब आंदोलन की बात आती थी तो गांधी का मुंह जोना पड़ता था। जब तक गांधी नहीं बोलेंगे जनता नहीं आएगी। हालांकि ये बहुत सरलीकृत रूप है कहने का, लेकिन ये भी कहा जाना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा, 40 के दशक में गांधी के ऊपर दबाव बढ़ा और गांधी के दबाव बढ़ने की इस कहानी में जो अगला पड़ाव आता है राष्ट्रवाद का, उसकी छवि उभरती है और वो बात है 1944 में। मैं इसको 47 तक नहीं ले जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 44 में ये तय हो चुका है कि भारत अब आजाद होगा।
और भारत की बागडोर अब भारतीय लोगों को मिलने वाली है। किन भारतीयों को और कैसे भारत को आगे बढ़ना है, इसकी तस्वीर 44 में बननी शुरू हो गई है। उस समय नए भारत के निर्माण के 3 स्वप्न एक साथ प्रकट होते हैं और ये लिखित दस्तावेज के रूप में है। These are 3 documents which need to be studied very carefully. नया भारत होगा, भारतीय भारत का शासन करें, संभालेंगे, ये बात। लेकिन 44 में हमारे जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था, जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जिसमें टाटा भी थे, इसमें बिरला भी थे, ठाकुर दास थे, मथाई थे, वो डॉक्यूमेंट है 44 की शुरुआत में। जिस डॉक्यूमेंट्स में अगले भारत का मतलब जो भारत अब बनेगा, भारतीय के नेतृत्व में चलेगा, राज्य चलेगा, उसकी बात आनी थी। एक ये प्रपोजल था जो भारत के बड़े पूंजीपतियों की तरफ से बनकर आया था। दूसरा प्रस्ताव गांधीवादियों की तरफ से आया था और तीसरा प्रस्ताव जो है वो एम.एन. रॉय की तरफ से आया था। तो ये जो 3 प्रस्ताव हैं, इस 3 प्रस्ताव पर इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को रुक कर सोचना चाहिए। उसके बाद भारत बटा और भारत के 2 टुकड़े हुए और 47 के बाद जो नया नेतृत्व आया वह कैसा था, इस बड़े प्रश्न पर ही हमारे अगले राष्ट्रवाद के फेज का पूरा ताना बाना हम समझ सकते हैं। ये जो मैं 2 टेंशन कह रहा था पॉपुलर नेशनलिज्म का, जिसकी शक्ति के सहारे मिडिल क्लास नेशनलिज्म ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया था, जब वो चले जाने लगे तो सारी शक्ति जो है, अपनी राजनीतिक सत्ता जो है, वो मिडिल क्लास के हाथों में ही दे गए। कुर्बानी लोगों ने दी थी। फांसी पर चढ़ने वाले लोग जो थे वो पॉपुलर डोमेन के लोग थे, अगर मैं क्रूडली सम अप करूं तो। लेकिन बागडोर जो है वो दे गए मिडिल क्लास नेशनलिस्ट को। और यही वो क्रक्स है, यही वो पॉइंट है जहां से तीसरे फेज का जो नेशनलिज्म है उसके बारे में बात करना और उसको क्रिटिसाइज करना, उसके पक्ष या विपक्ष में बात करने की बात आएगी। तो ये कैसे हुआ? सत्ता मिडिल क्लास नेशनलिज्म के साथ जुड़े लोगों की हुई और वहां गांधी पार्श्व में चले गए, बैकग्राउंड में चले गए। जो जनता की शक्ति लिए मध्य वर्ग के स्वप्न के साथ खड़े हुए गांधी थे, अब गांधी की उपयोगिता खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत क्रूडली बोल रहा हूं ताकि उस बात पर चोट कर सकूं। जो बात मेरी मुख्य बात है कि ये जो 47 के बाद का भारत है, यह नेशनल मूवमेंट के दौरान भारत के राष्ट्रवाद का कंटिन्यूएशन है या नहीं, यही वो सबसे बड़ा प्रश्न है जिस पर कि हम लोगों को आज सोचना पड़ रहा है। यह भारत ऐसे संविधान को बना रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भी आदमी किसान का प्रतिनिधि नहीं है, किसान की कोई बात नहीं है। सभी उच्च शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं और वे सभी लोग पूरे भारत के अच्छा स्वप्न देख रहे हैं, अच्छी बातें सोच रहे हैं, देश के नवनिर्माण का संकल्प ले रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात सोच रहे हैं। लेकिन वही कर रहे हैं, पॉपुलर डोमेन का प्रतिनिधि वहां पर संविधान में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है। अब मैं इसमें संदेह नहीं कर रहा हूं, जो बड़े नेता लोग आए थे वे सभी बहुत ही बड़े नेता थे और वो हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती है। लेकिन वो जिस शक्ति के प्रतीक है वो लेकिन मध्यवर्गीय मिडिल क्लास नेशनलिज्म के ही लोग हैं। अब इसके बाद जो तीसरा फेज है जिसको मैं कहता हूं नेहरूवियन फेज, सुविधा के लिए नेहरू उसके केंद्र में है। लेकिन ये नेहरू जो है, मैं थोड़ा रिस्क लेके कहना चाहूंगा कि ये 1930-31 के नेहरू नहीं है।
ये नेहरू 2 है। ये मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय नेहरू का संस्करण है और उनके साथ राजनीतिक रूप से खड़े हैं। और ये जो नेहरू है, ये औद्योगिकीकरण, पूंजी निवेश, बड़े सेक्टर्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जो है, मतलब जो आधुनिकीकरण का जो पश्चिमी मॉडल है, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं, लगभग गांधी की सी सदिच्छा रखते हुए कि सभी लोग एक साथ मिलकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। इस गाने में वो स्पिरिट जो है समअप होता है, जिसमें कि हम इंजीनियर लाएंगे, बड़े बड़े डैम बनाएंगे और उसके बाद भारत खुशहाल हो जाएगा, हम काम करेंगे और हम खुशहाल हो जाएंगे। तो ये जो चीज थी, ये मिडिल क्लास नेशनलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल के साथ बढ़ा हुआ नेहरूवियन प्रोजेक्ट था। और ऑब्वियसली इसमें आम आदमी की चिंता मिडिल क्लास के तरीके से हुई थी और उसके अपने विरोधाभास हैं। और ये जो न्यू नेशनलिज्म है, नेशन इन मेकिंग का मामला है, इस नेशन इन मेकिंग के पास ही भारत के जो हिस्टोरियंस हैं, किसी समय उन्होंने नेशनल मूवमेंट को नेशनलिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाकर पेश करने की कोशिश। तो ये जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज के बाद एक फोर्थ फेज इसके बाद आया। ये जो फोर्थ फेज है, इसके लिए मैं कहता हूं, दिस इज द रिटर्न ऑफ पॉपुलर नेशनलिज्म विद a vengeance. With a vengeance. Now, religion has become most important thing, and it is now bringing back the wounds of past, and it is searching for suitable past in order to give a new face to Indian nationalism, where things are controlled. Things are done in such a manner in which the second phase, where the real जिसको कहते हैं कि हाथ से निकल गई चीज, उसको, और तीसरे में जहां पूरी तरह से हाथ से निकल गई चीज थी पॉपुलर नेशनलिज्म की, उसकी वापसी होती है। और ये जो फेज है जिसमें हम आज जी रहे हैं, ये चौथा फेज है। तो मैं अपनी बात को समअप करने की कोशिश करूं। पहला फेज मैंने कहा, जिसको मैं तिलक के माध्यम से रखना चाहूंगा, जिसमें भारत की एकता का एक आधार बना, इसमें धर्म का भी महत्व है, धर्म भी था, और बहुत सारी पारंपरिक चीजें थी जिसके आधार पर भारत में नेशनलिज्म को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें काउ प्रोटेक्शन भी है, उसमें हिंदी भी है, और एक हिंदुस्तान का एक नया चेहरा है, प्राचीन गौरव का ध्यान करना है, और भारत को फिर से एक शक्तिशाली भारत बनाने का स्वप्न था। लेकिन उसमें एक किस्म की पारंपरिक सोच थी, परंपरा के साथ एक आंतरिक और एक धार्मिक जुड़ाव था। ये तिलक का फेज है। इसके बाद गांधीयन फेज आया, जिस फेज में एक तरह से दोनों चीजें साथ साथ रही, और ऐसा लगा कि लोग भी संतुष्ट होंगे, लोग भी खुश रहेंगे, लोगों को भी कुछ मिलेगा, और देश आधुनिक भी बनेगा। मतलब मध्यवर्गीय स्वप्न भी पूरा होगा और लोगों का स्वप्न भी पूरा होगा। लोग भूल जाएं, जाति भूल जाएं, धर्म भूल जाएं, प्रादेशिकता भूल जाएं, तमाम विभेदकारी जो बातें हैं उसको भूल जाएं, क्योंकि हमको एक राष्ट्र को तैयार करना है। जैसे ही वो राष्ट्र आएगा, लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इसलिए भारत में आंदोलन शुरू हुए,
और आंदोलन शुरू होने के बाद एक समय आया कि आंदोलन नहीं, अब हमको क्रांति की जरूरत है। तो क्रांति करने वालों को समझाया गया कि बाबा क्रांति हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्रांति के लिए रुको, हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति करेंगे जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, अंग्रेज चले जाएंगे तब हम लोग क्रांति करेंगे, किसानों को उसका हक मिलेगा, श्रमिकों को उनका हक मिलेगा, ऊंची जाति नीची जाति का फर्क मिटेगा, प्रादेशिकता खत्म होगी, हिंदू मुसलमान का विभेद खत्म होगा। लेकिन 47 में जो हुआ उसमें एक तरफ देखा गया कि हिंदू मुसलमान के आधार पर देश बट गया, ये देखा गया कि प्रांतीयता ने सर उठा दिया, ये देखा गया कि भाषाई विवाद खड़े हो गए, जाति विभेद बढ़ गया, सब कुछ इधर उधर हो गया। किसानों को वो जो चाहते थे नहीं मिल रहा है, श्रमिक चिल्ला रहे हैं, गरीबों को उसके अधिकार नहीं मिल रहे। ऐसे समय में नए राष्ट्र के निर्माण का जो संकल्प लिया गया, जिसको मैं नेशन मेकिंग प्रोजेक्ट कहता हूं अंडर नेहरू, उसने रेटोरिकली बहुत कुछ देश को देने की कोशिश की और एक देश के निर्माण का स्वप्न रचा, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो सका। उसके बहुत सारे कारण है, उसके लिए नेहरू को ब्लेम करना जो है एक बहुत सीधा और सिंपल रास्ता है, लेकिन उसके लिए कम से कम मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी तत्वों के साथ जुड़े बेनिफिशियरीज ऑफ इंडियन न्यू सिस्टम, इनको लाना चाहिए। They are responsible for this failure. If they are reaping the fruits of this, then they must be held responsible for its failure also. So ये जो न्यू क्लास आया जिसने सत्ता पाई, ये वो क्लास था जो अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। इसने कुर्बानी नहीं दी थी, लेकिन इसने जो है सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, और वही पुराना तंत्र जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था वही लगभग चलता रहा। बस इतना अंतर हो गया कि भाई ठीक है, अब हम लोग नए भारत में आ गए हैं, अब नए भारत में मिलजुल कर अपना काम करेंगे, अच्छी चीजें बनाएंगे, देश को शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन देश के नवनिर्माण का जो ये संकल्प था, ये कोई बातों में हल होने वाला नहीं था। इसके लिए एक क्रांतिकारी पदक्षेप की जरूरत थी, और वो डिटर्मिनेशन नेहरू के मन में भले ही रहा हो, उस क्लास के चरित्र में नहीं था जिस क्लास को भारत की राज सत्ता मिली। स्वाभाविक है कि बिखरा, स्वप्न बिखरे, जो 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 विभाजन, जो डिवाइसिंग फोर्सेस थे वो सब उठ खड़े हुए, भारत बंटता हुआ दिखाई दिया। और ये जो बटना है, अब इसमें जो है वो धर्म जाति सब कुछ इसमें शामिल हो गया। ये एक नया भारत था, नए स्वप्न का भारत था, लेकिन एक डिवाइडेड भारत भी था। बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र का संचालन इस रूप में हो सका कि भारत में फिर से कोई विभाजन नहीं हुआ और फिर से कोई टूट नहीं हुई। लेकिन तोड़ने की कोशिश तो उस वक्त भी शुरू हो ही गई थी, और मुझे लगता है कि इसके सारे ट्रेसेस जो है कॉलोनियल पीरियड में ही प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त गांधी थे, और गांधी के साथ खड़े बहुत सारे लोग थे जो लोगों को समझाने में कामयाब हो सके थे कि हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हम एक नए भारत का स्वप्न लिए चल रहे हैं। आजादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि वो आक्रोश जो है वो बढ़ा। अब जो चौथा फेज है, इसको मैंने साहस पूर्वक खतरा लेकर कहा है कि इट इज द रिटर्न ऑफ द पॉपुलर नेशनलिज्म, जिसमें रिलीजियोसिटी ये सब चीजें ज्यादा हैं, लेकिन विद ए वेंजेंस, विद ए ब्लाइंडनेस। और ये जो ब्लाइंडनेस है उसके बारे में हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा। ये पॉपुलर नेशनलिज्म की वापसी है, लेकिन पॉपुलर नेशनलिज्म के अपने खतरे भी होते हैं, और ये बात जो है हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि पॉपुलर नेशनलिज्म एक किस्म के फोर्स को जनरेट कर सकता है जो देश को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, एक सूत्र में बांध सके। लेकिन एक खतरा भी होता है कि ये इसके बीच में कोई ऐसी चीज पैदा हो जाए जो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म को महत्व दे और बाकी सारे जो बंद हैं उनको महत्व न दे, संस्कृति को महत्व न दे। और एक तरह से भारत में जो वर्तमान दौर है ये बहुत ही चैलेंजिंग दौर है, और इस समय
समाजशास्त्रियों को, खास करके इतिहासकारों के लिए ये सबसे कठिन समय है। आई थिंक ये, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई समय इसके पहले आया था जहाँ की इस तरह से सोशल साइंस को, इस तरह से हिस्टोरियन को अपनी गर्दन जो है वो गिलोटिन के नीचे डालने की सी स्थिति पैदा हो गई है। मतलब पूरे साहस के साथ उसको अपनी बात को कहने की जरूरत पड़ी है। मैं राहुल सांकृत्यायन के एक कथन के उदाहरण के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। इस तरह की बातचीत का सिलसिला चलता रह सकता है, मैं जानता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आती है कि संस्कृति जो होती है उसमें 3 तत्वों का समुच्चय, वो समेशन होता है। भाषा, कला और धर्म। भाषा, कला और धर्म, इन तीनों से मिलकर संस्कृति होती है। अगर आप चाहेंगे, अब यहाँ पता नहीं रामविलास शर्मा को कितने लोग जानते हैं, तो भाषा पर अतिरिक्त महत्व देकर संस्कृति की बात, सांस्कृतिक एकता की चर्चा कोई करे रामविलास शर्मा की तरह, वो भी नाकाफी होगा। कला कुमार स्वामी की तरह अगर वो सोचने लगे तो भी वो नाकाफी होगा। और धर्म के आधार पर तो एकता की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं ही। ये तीनों का एक समन्वय जहां हो, वहीं संस्कृति हमको बांधती है, हमको एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और इस संस्कृति के बोध के साथ अगर हम अपने राष्ट्रीय एकता, नेशनलिज्म की बात सोचें, तो हम ये 4th फेज में कोशिश कर सकते हैं कि इंडिया कैन गेट ए नेशनलिज्म व्हिच कैन बाइंड पीपल together in a manner which eluded the first 3 phases. So I conclude my lecture here with the hope that my friends, young friends, would take my submissions in a democratic manner. I sometimes provoke, sometimes even say something which should not be said before the young audience, because they can understand it in a different manner and they can misinterpret it. But this is the way I talk, and Professor Vishwanath Mishra and Professor Rao have given me this opportunity, so I shared my own thought, and that's how I would like to conclude. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी। आपके व्याख्यान में ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत सी ऐसी गुंजाइश है जहां पर हमारे सहभागी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मैं स्वयं चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं पहले, वो बातचीत में यदि उनके पास कुछ शंकाएं हैं तो अपनी बात को रखें। और मैं देखा था कि डॉक्टर प्रिया चैट बॉक्स में कुछ लिखी हुई थी, तो डॉक्टर प्रिया आप ही शुरू करिए, आप अपनी बात रख सकती हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियंका, मैं विभाग में इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही पढ़ाती हूँ। आपका लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था सर। मेरे पास 4 इंटरवेंशंस हैं, 4 सवाल हैं। एक, सबसे पहला, जिस तरीके से आपने राष्ट्रीय आंदोलन को समझाया, नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को समझाया, बहुत ही लार्जली ओवरशैडोड है एक गांधीयन लेंस से। So you've tried to explain 2 major phases. I can't hear you properly. Oh, could you be louder? Am I audible now? Am I audible? Barely audible, I would say. Barely audible. Barely. I can hear you, but not properly. Okay. I don't know what. Right, yeah, so I feel that there is a very strong Gandhian sort of lens to the way you've looked at nationalism, and invoking the movement and nationalism coming largely from a middle class sort of. Wait, just 1 minute. Huh? I think I would need microphone. Yeah. Sorry. Am I audible to others, sir? Vishwanath sir, आपको आवाज आ रही है हमारी? Yes. I can hear you. Okay. But not very clearly. I don't know what is the problem. I will try to speak closer to the microphone. Loudly, थोड़ा जोर से अगली बार बोलिएगा.
Maybe I'll wear my headphones too. Is this better? Yes, yes. Yeah. Okay, great. So my intervention first coming from a very strong Gandhian sort of lens. But also, during the movement, as you mentioned, there were many groups which were not, in the way we write history, we've not been invoking them, but there's been a sizable presence of the subaltern groups that the subaltern history has very successfully brought in. But I would want to bring in the experiences of the women leaders to say that, they were scattered, they were fragmentary. I think there was a collective, there were a large number of collectives whereby the women thinkers and women themselves were raising these pertinent questions, which were also questions regarding to the nation. So to say that it was a middle class sort of movement needs a certain kind of problematization. Also, the period of 1940s is very fascinating. It is fascinating because there are various ideologies which are coming together in the form of the socialist, in the form of the communist, in the form of the constitutional liberal, and also the nature of the Constituent Assembly. We need to also be mindful of the fact, what was the nature? What was the intake? How are these people becoming part of the Constituent Assembly? Because the franchise had not really been widened in the way it should have. And therefore, what you have as the Constituent Assembly debates, I think, are one of the most fascinating debates on the nature of a colonial society and its sort of, movement towards a new nationhood. And some of the most important debates were about the normative of the nation. And we also need to understand that, some of the decisions that were taken in the Nehruvian government was not simply coming from rhetorics. I would want to bring your attention to some of the documents that Jayaprakash Narayan had actually shared with Nehru. And Nehru very eagerly took on those debates, despite the political differences, despite the differences in terms of their outlook. But Nehru was, in terms of conciliating some of the most important debates. And I think that is a very important moment for us to understand that, taking the nature of our society, the kind of problems, the kind of challenges. And I would want you to take the attention of the audience here to the letters that were written to the chief ministers. If we look at the letters that Nehru, apart from the discovery of India, but these are political texts, these are political documents in which he is sharing his anxieties, he's sharing his vision, he's sharing what are the larger sort of ambitions of the nation. So I think that is very, very important to look at those letters for us to actually examine how much of that was rhetoric. Of course, the focus was on industrialization, but also at the same time, there was the looming agrarian question that Nehru took into consideration. Therefore, if you look at the second 5-year plan, there's a lot of emphasis on the agrarian question. If you look at the person, we've just celebrated his birth anniversary, Dr. Baba Saheb Ambedkar, and if you look at his interventions, because the Constitution was also a legal document, it was also a set of rule of law that the nation was sort of providing. Interventions from thinkers like Kamla Devi Chattopadhyay, a socialist feminist, and her role in reviving the art and craft and handloom sector, saying that that is not just a sector of industry, but one of the largest employment provider. So what I'm trying to say basically is that it is, the idea of India is not simply emerging from a certain kind of rhetoric, a populist imagination of the middle class, but it has significant presence of the marginalized. And when I'm saying marginalized, I would want to bring in the depressed classes. I would want to bring in the women. I would want to bring in the farmers. The farmers and the workers' questions were being rallied by the Congress Socialist Party, eventually the Socialist Party, which was led by people like Ram Manohar Lohia, Jayaprakash Narayan, Meenu Masani. So it's a very complex sort of movement. And I would just go back to what you'd started initially, that these phases are not really, cannot be straight-jacketed. They are not watertight compartments, because there's also a lot of coming in of various ideologies at various points. So the idea of India is actually a very dynamic idea that you're getting from the Constituent Assembly debates and post-independence, and also during the course of the national movement. Thank you. Thank you for bringing those issues. And in fact, you are right, and I would agree to most of your points. But what I was trying to do is to give the focus to the crux
crux of the problem. If you go by the writings of Nehru and what he showed what he is trying to do. I mean, he pretended, I would be a strong word, but he gave us a very liberal image of himself. And I think you have brought a very important issue of how he dealt with Jayaprakash Narayan's suggestion. A lot of things are yet to be brought into light. JP had a very good association with Nehru. And this association needs to be probed further. Within the Socialist Party, there was a section which was seen as very close to Nehru, too close to Nehru. And you must be familiar with that. And this proximity to Nehru establishment is something which is very significant. Lohia was very critical about it. And in this proximity works a kind of politics in which the beneficiaries are always with Nehruvian establishment, to put it bluntly. And this is where Nehruvian establishment is not necessarily led by Nehru. I would like you to understand this, that Nehru himself, what he has written to the chief ministers, great prose, extraordinary ideas, very liberal understanding of it. What actually is there on the ground, what is happening in the ground? I'll give an example. He has written letters to West Bengal chief minister. What is happening in the ground and what he is saying in his letter do not gel together. He says that what if Hindus are coming to India and Muslims are going there? Some Hindus are also going back to East Pakistan. He says so. Very few have gone back. Very few have gone back to Pakistan. And the chief minister was insisting that so many people are coming from East Pakistan. So this kind of saying that we are happy that some Hindus are going back to East Pakistan. This does not make a very clear understanding of what he actually was able to acknowledge the realistic positions. And I have examined the Khosla edited that book, the book which is available now. Khosla is the editor of that book probably. I read that book very carefully, and I found that liberal, good-hearted Nehru is not at ease with the reality, the real picture he is addressing. Gandhi had this problem of saying with good intentions something good which looks good in paper, but when you take into cognizance millions of people being forced migrating from one place to another in a very hostile environment, that reflection is not there in the letters. But I would agree on that point that women leadership had so many questions there, and those sections should have been also be coming in our discussion when we talk about national country. That is something which I missed. I somehow, not intentionally, but I did not bring in. But I have strong reservations about the way you defended Indian ideology, and I have reasons for that. You must have read Perry Anderson's book, Indian Ideology, and which is a very critical look at Indian ideology. Initially, we all thought with Rajmohan Gandhi that it's a very critical one, and it's a very negative exercise, so to say.
But when I started looking at the same process with literary evidences, literary sources, I found that there is some validity in that. It's not that Indian ideology was inclusive. It had a bias, inbuilt bias, for what I call middle class nationalism. I mean, those people who had been associated with that. It sounded good, and I admit that the person who would come from London or America and read those texts, wonderful prose, good intentions, liberal ideas, and all that, he would be very impressed. But if somebody is familiar with the hard and very tragic situations which had been there on the ground, he would not be convinced. He would be rather feeling aggrieved that this kind of things are being said. We are suffering so much, and there is no reflections of our sufferings in those texts. I think I have done some work on it, so therefore you should give me some advantage, or say, I've done a book on it, and I have very carefully examined these facts, that what Nehru says and what is actually happening on the ground, there is a huge difference. Yashpal has written a book, Jhootha Sach, and there this comes through very clearly. Bhagwati Chan Verma has also written a very remarkable book, Seedhi Sachi Baatein, where he actually faces this question head on. And I think that those books have given me the confidence to say that Indian ideology was all good on paper, but not good enough if we take into cognizance the ground realities. So let us continue this debate, but I loved the way you put the question, and I think these kind of questions and inputs, in fact some inputs were also there. I really enjoyed, and I also admit that I've been enriched by your remarks. Thank you very much, Dr. Priyanka. You're faculty there? I mean, if I can ask. Wonderful. I liked it. दूसरे सहभागियों से आग्रह करूंगा, चैट बॉक्स में मैं और भी कोई सवाल आए हुए देखा था, लेकिन टेक्निकली मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, तो मैं आग्रह करूंगा वो सवाल आप पूछ लें, क्योंकि वो चैट बॉक्स में कहाँ है, कैसे खोजना पड़ता है, ये मुझे नहीं आता है। तो कृपया आप अपना सवाल जो था वो पूछें। I can see the name of Professor Chandrakala Bhatia. Is she there? I mean, okay. Namaskar, madam. How are you? मैं इस बीच आपसे एक मेरी जिज्ञासा है प्रोफेसर हितेंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं कि सेकेंड फेज में भी जो रिलीजियस सिंबल्स थे उनकी बातचीत की जा रही थी, और अभी जो फोर्थ फेज हम लोगों के नेशनलिज्म का है वहाँ भी वो फिर से आ गया है। हालांकि उसमें एक फर्क है, आपने वो दर्शाया। यदि सेकेंड फेज में जो रिलीजियस सिंबल्स जिस तरीके का गांधी इस्तेमाल कर रहे थे, उसके साथ कुछ खास बातें जुड़ी हुई थी, और वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे कि उस रिलीजियस सिंबल्स के जरिए, जिसमें दया है, करुणा है, सुचिता है, इवन आत्मनिग्रह है, तो इसके जरिए ऐसा लगता है कि जो एक मॉडर्नाइजेशन का फेज आ सकता है, जिससे कि एक डिमांड कंस्ट्रेंट बढ़ सकता है हमारी सोसाइटी में, मतलब मांगे बहुत बढ़ने लग जाए आधुनिकता की वजह से, तो उस तरह के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करके जो आधुनिकता का एक नकारात्मक प्रभाव समाज पर हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे गांधी उसको एक तरीके से अपनी पहल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अभी के फेज में रिलीजियस सिंबल्स का जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल जिस तरीके के वो नेताओं की शब्दावलियों में आते हैं, वो कोई चरित्र को सुधारने वाली या हमारे आत्मनिग्रह करने वाली वस्तु जैसी नहीं दिखती है। तो इस हालत में मैं देख पाता हूं कि जो सेकेंड फेज में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था और जो आज के युग में
किया जा रहा है उसमें बड़ा गुणात्मक अंतर है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि आपने इस पर कुछ महत्वपूर्ण काम किया हुआ है। आप इसके अधिकारी विद्वान हैं और मैं अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। आपकी बात सही है। आई थिंक वो उसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों में फर्क है, लेकिन जरा फर्क को इस रूप में देखिए कि ये जो मुस्लिम लीग का जो राजनीतिक आंदोलन था, खास करके 46-47 का, उसमें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया था। तो आप पाएंगे कि एक ऐसा नेतृत्व जो येन केन प्रकारे अपनी बात को प्रतिपक्ष को मनवाने पे तुला हुआ है, वो एक आक्रामक भाषा का प्रयोग कर रहा है और बहुत बुरी तरह से करता है। और वो उसकी वेपनरी का एक हिस्सा है, उसका जो वो उसकी राजनीति के लिए वो जरूरी है। अगर वो गांधी की तरह बोलेगा या फिर मौलाना आजाद की तरह बोलेगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। उसको उसी तरह से बोलना होगा क्योंकि उसकी कंस्टिट्यूएंसी और उसी भाषा की मांग उससे कर रही है। तो एक तो ये बात मुझे लगती है। दूसरी बात ये है कि जो समय है उस समय में आपको अगर हम तुलना करें तो वो लगभग प्री ट्रांजिस्टर युग था। ट्रांजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था, लोग सुनने की आकुलता के साथ सुनते थे। तो अब जो है इस इतनी तरह की आवाजें आ रही हैं और इतने तरह के मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है कि आपको अपनी बात को लाउडली ही कहना पड़ेगा और लाउडली में भी उसमें एक पंच लाइन डालना पड़ेगा। यह अभ्यास बन गया है अब लोगों को कि जो बोल रहे हैं, बोलने को अगर वो पंच लाइन से खत्म नहीं करेंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो सर हम लोग बहुत ही आक्रामकता से भरे एक माहौल में जी रहे हैं और इसलिए अकादमिक जो आवाज है वो कभी भी उस तरह से तो नहीं हो सकती ना। इसलिए अकादमिक आवाज को लोग नहीं सुन रहे हैं और लगभग चिचियाती हुई आवाज जो है वो पत्रकार, आप कल्पना कर सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर के प्रभाष जोशी तक कोई भी इस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि विमल रॉय कश्मीर को ऐसा दिखा सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर का कोई भी सत्य वही दिखा सकता है, लेकिन क्या इस भाषा में अपने फिल्म को डिफेंड कर सकता है? मुझे नहीं लगता। मैं उनको दोष नहीं देता, ये समय समय की बात है और एकेडमिक के रूप में चूंकि हम लोग इतिहास होता है ना, इतिहास जो है वो पीछे और अभी को देखता हुआ इस तरह से चलता है। तो मुझे जब मैं सुनता हूँ पॉलिटिशियंस को तो मुझे उस तरह के नेता भी याद आते हैं जो बेयरली लगभग ऑडिबल वॉइस में बोल रहे होते थे और जनता न सिर्फ सुन रही थी बल्कि जीवन पर्यंत उसको याद रखने के लिए सुन रही थी। किसी ने कुछ एक वाक्य सुना तो वो वाक्य उसको मतलब बुढ़ापे में भी कोई पूछेगा तो उन्होंने कहेगा हाँ उन्होंने ऐसा कहा था, मुझे याद है। तो समय समय की बात है, लेकिन ये दौर जो है इस आक्रामकता को भारत कभी भी आक्रामकता को बहुत दिनों तक सहन नहीं कर सकता। भारत बहुत ही मैच्योर एक देश है। इस देश में जो विवेक है, जिसको मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ करके देखता हूँ, इतिहास यही बताता है कि यह देश आक्रामकता को अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो आज आक्रामक है वो भी विवेकशील बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राजनेता ऐसी भाषा का प्रयोग अब नहीं करते दिखेंगे बहुत दिनों तक, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। और यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि आक्रामकता प्रभावी है, इसीलिए आक्रामकता ज्यादा है। तो let us not blame only the leaders. You should also blame the people who are shouting with them and loud. This kind of loud articulations are appreciated. So audience should also be taken into cognizance and they should also be partly blamed for this entire kind of aggressive environment. यही मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बेहतर
आप थैंक यू। आपने हाना आर्ट को पढ़ा है, आपने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है इसके ऊपर। मैं जानता हूँ कि ये सवाल इतना आसान नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों की सवाल है, मैं इसी रूप में इसका उत्तर देना चाहूँगा। हमारे और कोई सहभागी यदि अपना कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। Hello sir, I have two questions. यस प्लीज। First is, in which phase of nationalism where would you like to put the decade of 70s and 80s when quite popular regimes were in power which were taking pro-poor decisions like nationalization of banks, and those governments must be at larger support among the people. And the second question is that today under this popular regime also, some elites and industrialists are being benefited at the cost of majority of poor Indians. So how can this be called the return of popular nationalism? Thank you. Oh, that's a good question. In fact, I was waiting for this question. You see, you have talked about nationalization of bank phase 69, 70, up to 60s, late 60s, or maybe up to 70. Okay, I think I would like to put this in the second phase. I mean third phase rather, Nehruvian phase. But Nehruvian phase itself is can be divided into two parts, rather three parts. For that we can have another discussion. But what I am trying to say is that in the context in which this was done, you must be familiar with that, was extraordinary. There was a kind of left influence in the governance. Ian Huxer and others were trying to bring Indira Gandhi to a socialist project or leftist project, so to say, and this is part of that. And that was done in a situation in which the right Congress, led by Morarji Desai, was putting pressure. In fact, that was a very critical time, and at that point of time, some populist and some pro-people measures were taken, and this was also part of that. But later on, the same thing did not continue. You may say a little bit about emergency period. Also, some measures were taken, but that was another extraordinary situation. That is not a very well thought out process thing, which continued after 70 or 71. It did try to it brought back some of the things, and you know how emergency came. So I would not say that it is a very different thing and it was a very novel thing in that sense. It was never been properly grounded, and it could never be implemented the way it should have been. So it was like that. And another thing, what was your question? The next question, the present dispensation and the benefits of big corporates and the cost of poor. Is it so? It's very obvious. I don't need to say this. I mean, India is entering into a new phase. I do not know much economics to either appreciate or condemn it, but on the ground level, it is very obvious that we are witnessing something extraordinary in India, and because the rich are getting richer is obvious. It's very obvious that even during the Corona period, big capitalist houses did not suffer the way Indian poor people suffered. But for that, I think we need to be careful to not to say. I mean, we should be careful about taking things in a broader framework. Government has its own defense, and it can also provide some statistics to show that India is progressing, where poor people are also getting benefited, and so on and so forth.
It's up to our understanding of how we look at it. I mean, this is unfolding. This is progressive. I am yet to see its the process getting over very quickly. So once historian's job begins, once the process ends. So I think after that we will be able to make assessment of how this fourth phase of Indian nationalism fares in historical assessment. प्रोफेसर सुभा राव मैम हैं उपस्थित और प्रोफेसर सुभा राव मैम हैं. Yes, she was all through. I think she was all through. डॉक्टर प्रियंका. जी सर. अब हम लोग इसका समापन करते हैं और मैं प्रोफेसर हितेंद्र के प्रति बड़ा आभारी हूँ और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ. Thank you, sir. On this note, I would like to thank Professor Hiten for giving such an insightful lecture into the stages of nationalism. और मुझे लगता है कि इस लेक्चर से बच्चों को बहुत नॉलेज मिला है, बहुत ज्ञान मिला है कि हम किस तरीके से अलग अलग जो एस्पेक्ट्स रहे हैं हमारे नेशनलिज्म को के संबंध में उसको समझने का उनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला. और Professor Rao is here, so maybe I would just request. I was just giving the vote of thanks. Professor Vishwanath had asked me. Would you like to do that? मैडम आपको. Please unmute yourself, ma'am. But I will give the mic to ma'am, and I would just say that, sir, thank you so much. आपने जो हमें challenges बताए हैं और हमें जो अपने साथ हमारे साथ जो एंजाइटी शेयर किए हैं, बहुत कॉमन एंजाइटीज हैं और मुझे लगता है हम आपकी बात को बहुत सीरियसली लेंगे और मीडिया के चपेट में नहीं आने वाले हैं और सीरियसली अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अपने क्लासेस को लेंगे, अपने आइडियाज को लेंगे. So thank you. I would now request Professor Rao to share her vote of thanks. Thank you so much, sir. Thank you. हालांकि हम कुछ विभाग की जिम्मेदारियों की वजह से हम कुछ तो लगातार सुन नहीं सके, इसका हमको दुख है. लेकिन जो असर आपका व्याख्यान जो डाल रहा था श्रोताओं के ऊपर उसके हम उससे वाकिफ हैं और बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा आपके लेक्चर का. बहुत जितने आराम से हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या उससे अच्छा हिंदी में आपने जितने रिलैक्स ढंग से आपने अपने हमारे विद्यार्थियों को और फैकल्टी मेंबर्स को अपने विचार बताए, वो मतलब बहुत खास मुझे लगा, सबसे उल्लेखनीय. बहुत आभार है आपका और बाद में भविष्य में आगे भी आपको सुनने का मौका मिलेगा तो हम लोगों का सौभाग्य होगा. इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना आभार और धन्यवाद एक बार फिर आपके लिए व्यक्त करते हैं. बहुत धन्यवाद. बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर. थैंक यू प्रोफेसर. ये देखो कि ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, इसके बाद भी कुछ करना पड़ता है ना. इधर आओ. अरे नहीं, कहाँ से स्टॉप करना होता है, ऊपर से आता है. वहाँ नहीं है, इधर है. अरे ऐसे नहीं होता.